आयुष समृद्धि की इस अनंत यात्रा में स्वागत है. We would like to welcome you all on behalf of Independent Research Ethics Society. This society has generated a wave of brainstorming, knowledge sharing, beautiful inspiration for next gen as we are celebrating every day with our AYUSH and communicating our sentiments to the next gen that our Ayurveda, our AYUSH, homeopathy, Unani, Siddha, Soa Rigpa can definitely be involved in every moment of the life. What government has decided this year, we are practically following the same Har Din, Har Ghar Ayurveda or Ayurveda every day, everywhere. So the same is our concept and we are celebrating every day with our AYUSH. On the particular day, as today is Universal Health Coverage Day. Health coverage is very necessary. Recently, Government of India and Government of States, Indian states have announced various schemes like Ayushman. In Gehlot government, they have different name. In Mamata Banerjee government, they have different name. But health coverage is the prime important area where government of India has really planned for that, Ayushman Bharat, etc., etc. Practically, it had to be implemented. But where we are going to have private treatment, for what is the system actually in our India, whether we can go for any reimbursement, whether we can have any insurance for that. So we have invited our expert. Two experts are from homeopathy, Dr. Ritesh Shah and Dr. Ambika Tiwari. And our respected doctor and advocate, Dr. Rajendra Khatavkarji, and one insurance expert, Mr. Sanjay Shaw. So all will guide us that how we can have insurance for our AYUSH treatment also, and how we can be benefited by that. What is the system? What is the application of Mediclaim involving AYUSH? And from Ambika ji, we would like to request in her speech that she will communicate what is the system of National Health Scheme in UK. She is from London. So without wasting much time, I would like to request Professor Vishnu Prasad Sharma ji, ex-principal, Government Ayurvedic College, Guwahati, Assam, and President Vishwa Ayurved Parsad. Welcome, sir. Thank you. Namaskar. Good evening to everybody. Respected Dr. Rajan Patankarji, respected Professor V.K. Agnihotriji, respected Professor Pavan Kumar Sharmaji, distinguished guests, eminent speaker, ladies and gentlemen. I, Professor Dr. Vishnu Prasad Sharma, welcome all of you to this evening webinar on health coverage for AYUSH patients. Most important subject today. In this webinar, we have eminent speaker. I want to welcome all the eminent speaker. First, I want to welcome Dr. Ritesh Shah, Marketing Head, BCS Jupiter Hospital, Consultant Hospital Architecture and Planning from Indore. I welcome you, Dr. Ritesh Shah. Next, I want to welcome Dr. Ambika Tiwari from London, UK. So I welcome you, madam. Next, I want to welcome Dr. Rajendra Khatavkar, medico-legal advisor from Mumbai. I welcome you, doctor. Next, I want to welcome Mr. Sanjay Shah, insurance expert from Kolkata. I welcome all the eminent speakers, distinguished guests, ladies and gentlemen, to this
important evening webinar on health coverage for AYUSH patient. Once again, I welcome all of you. Thank you. Namaskar. Over to Pavanji. Thank you very much. Thank you very much, sir. Professor Agnihotri, sir. Thank you. Namaskar, Professor Pawan Sharma. It's a great pleasure to welcome all these special guests, distinguished personalities on today's 514th webinar. As Professor Vishnu Sharma already welcomed all these dignitaries by name, I feel honored to extend my heartfelt thanks for your sparing minutes for today's webinar. As he highlighted the point of medical insurance, especially in India, and what is happening in other countries, it's very, very important because life is precious. And I know that almost 24 companies of insurance related, maybe life insurance or on medical insurance, they are working a lot. But Star Health and some other companies are there. To which extent Ayushman card and other type of insurance are there where patient has to pay nothing, zero payment. And on contrary, there are so many other liabilities of a sufferer that how, if at all he passes away, the next of the year can be benefited out of that insurance which he has owned during his lifetime. So with the nominee or the spouse or the children, how they can be managed. So what medical insurance aspects are there in our country, we are going to listen from our very distinguished and learned guest speakers, especially those who are running with this. Our Dr. Ayanji, he is a doctor and medical, advocate also. So he will definitely throw light over this topic and will remove the doubts which are there in our minds. So with these initial words, I do hope that today's webinar is going to be very, very knowledgeable and very, very important from every point of view. And those who are joining by minute to minute, they are all being welcomed by us. And we do hope that we are going to have a very nice evening on this topic. Thank you so much. Over to Professor Pawan Sharma. Thank you. Thank you very much, sir. We welcome Dr. C.P. Sharma, ex-Joint Director, Government of MP, Ayush Department, Dr. Mahesh Sharma from Rajasthan, Dr. Sudhaji, Dr. Savita Bhonsle. She will be our speaker on quality control of ASU drugs on 20. So welcome all. Now, without wasting much time, I would like to invite our first dignitary. He is really very learned person, BHMS. Doctor, I am really sincerely thankful to Dr. A.K. Dwivedi of Indore, who has introduced Dr. Ritesh and Dr. Ambika to us. Dr. Ritesh Shah is BHMS Gold Medalist, MBA Hospital Management, PG Diploma in Hospital Management, PG Diploma in Medical Legal, and he is Marketing Head of Vishesh Jupiter Hospital and Consultant Hospital Architecture and Planning. So definitely we are eager to listen Dr. Ritesh. Welcome, Dr. Ritesh. Namaste, sir. Namaskar, Swagatam. Hope I am audible to all of you properly. Yes, clear, loud and clear. So once again, thank you very much, all the dignitaries for giving me this opportunity. आप लोगों के सामने आकर के अपने points को रखने के लिए ये मेरा सौभाग्य है सर कि आप लोग जैसे सीनियर डॉक्टर्स के सामने मैं अपनी बात को रख पा रहा हूँ. अगर कुछ गलती हो जाए तो प्लीज क्षमा कर दीजिएगा जूनियर समझकर. आई विल ट्राई टू पुट ऑल द बेस्ट अवेलेबल पॉइंट्स व्हाट आई हैव इन माय. ये आपका ही प्लेटफॉर्म है रितेश जी, आपका ही प्लेटफॉर्म है. जी सर. एंड सर ने जैसे कहा, डॉक्टर ए.के. द्विवेदी हमारे प्रोफेसर हैं हमारे मेडिकल कॉलेज के, एंड वी आर द स्टूडेंट ऑफ हिम, एंड ही इज डूइंग लॉट मेनी वर्क फॉर एक्सपैंडिंग होम्योपैथी एंड आयुष डिपार्टमेंट इन एंटायर मध्य प्रदेश इन आवर सिटी. And being myself, I'm as Sir told, Dr. Ritesh belongs to Indore, and I'm working in healthcare administration since more than 13-14 years. Right now, I'm working in one of the private hospital as a marketing head, and got an opportunity to work around 6-7 hospital in the due course of time, nationally as well as internationally,
I had for 2.5 years for international project in Africa also, and heading the operations of that particular hospital. सभी जगह पर काम करने के बाद में the knowledge, especially in segment of Mediclaim insurance sector, I got, which is quite very different. शुरुआत से लेकर के अभी तक में कि the 360-degree change happened in entire medical scenario about the insurance policies, insurance claim percentage, insurance claim settlement. When you talk about especially AYUSH department, so definitely the curve again changed for AYUSH pathies also, like all the branches comes under AYUSH department. They are getting a good response now from the insurance segment, especially from the IRDA regulatory bodies, such as and all the private or the national or international insurance mediclaim agencies. If we go bit in back, थोड़ा history में अगर अपन जाते हैं कि 2012-13 में जो insurance regulatory authorities थी, IRDA had pushed all the private and government agencies to start or to provide coverage for all the Mediclaim policy holders for AYUSH pathies treatment also, because there are many patients who are inclinations towards our pathies and they are taking treatment and they are we can say pocket bearing activities going on. So government ने उन पे प्रेशराइज किया IRDA ने कि आप इनको भी कवरेज देना चालू करिए, and slowly and steady all the insurance company realized that the many of their customers either in private segment or in the government agency segment they had utilizing the AYUSH pathies. So they had started giving coverage for all the AYUSH pathies treatment. So सर ने जैसे भी कुछ देर पहले कहा कि there are around 18-20 प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी है जो कि आयुष ट्रीटमेंट के लिए अभी कवरेज प्रोवाइड करती है. इफ यू स्टेट 4 मेजर गवर्नमेंट प्लेयर्स ऑफ आवर इंडिया, दैट इज न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल, यूनाइटेड, नेशनल. Apart from the government, there are private insurance company. The biggest player that is Star Health, Bajaj Allianz, Religare, Reliance, Universal Shampoo, Magnum, HDFC Argo, Cigna TTK, Liberty Videocon, and many more, 2-3 more. So all these had started giving coverage to their policy holders. If you talk about like insurance segment, so might be कि insurance companiयां कुछ direct काम करती हैं, means the claim settlement they do directly by themselves because they have a huge number of team in their insurance companies who are working for them. And there are few companies जो indirect काम करती है. They put some third person mediator, that is called TPA, third party administrator, to settle down, to reduce their clerical work and to give benefit to the patient. So the same process which they are giving or facility they are giving to the modern medicine patient, same thing they are giving to the AYUSH claimants or AYUSH treatment beneficiaries also. So the more or less the procedure are the same. There are 2 types of options we are getting, like one is a cashless benefit and another is a reimbursement benefit. Again, the documentation, the requirement, the do's and don'ts for both the things are more or less similar, but the criteria became different. Because when you talk about a cashless facility, the cashless facility, they give only to the few organizations or the hospitals who are, first of all, either government hospitals, means government AYUSH hospitals, or they are attached with a medical college and approved by the government agencies, or they are NABH accredited hospital, or they are affiliated to any of the medical college from the AYUSH department and run back like given permission from the government agencies. So these are a basic criteria they had kept for all the AYUSH pathy hospitals who are claimant under the Mediclaim insurance criteria. Once this criteria is fulfilled, the patient can opt for a cashless facility or the hospital can process for the cashless facility through their proper registered portal or the way they work for the cashless in modern medicine. If the cashless facility is not given by the patient or the hospital, they can go for a reimbursement facility. But again, the reimbursement facility, the criteria will be like same. The hospitalization has to be mandatory for at least 24 hours. ये होना जरूरी है. Plus, they should have a positive supporting document related to their treatment, like say sonography or X-ray or MRI or any of the thing that can give a clear picture
that this patient is suffering from these kind of things. They had enlisted their lot many criterias in their guidelines. So ये basic चीजों को fulfill करके हम उसको reimbursement भी apply कर सकते हैं. ये दो बहुत basic common बातें हैं. साथ में यहाँ पर हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि डे केयर प्रोसीजर्स के लिए बहुत सारी इंश्योरेंस टीपे जो है वो कवरेज नहीं देती है until and unless that is to be properly clearly justified कि ये इसके लिए डे केयर का प्रोसीजर अवेलेबल लगेगा या करना पड़ेगा, या उनकी कुछ गाइडलाइंस है. देयर आर सर्टेन ट्रीटमेंट आइदर इन आयुर्वेदा, आयुर्वेद इन सिद्धा, आयुर्वेद इन नेचुरोपैथी. दे हैड लिस्टेड कि दिस पर्टिकुलर प्रोसीजर they will be giving this number of sitting is required 4, 5, 6, 10. So they had enlisted there are certain things. So if you go online and search in the portal, they will have a listed things here. I have taken one sample for easy understanding if you can appreciate this kind of letter. So the guideline has been mentioned here, and they had mentioned here the procedure name, like heading is disease, then condition needing hospitalization or not, what are the conditions, then indication therapy is required as per the condition of the patient, what are the as per pathy, what are the condition required for the patient, and then what are the likely duration of this particular therapy, either hospitalization or 2 days, 3 days, 5 days, or maybe the cyclic rotation they required. So they required a weekly frequency, twice a week frequency, or therapy in a 2 week or 3 week. So they had mentioned as per the criteria. So these they are following when a claimant is putting their document for a mediclaim or a reimbursement kind of a process. There are some exclusion they are particularly taking care. This exclusion included treatment in a non-government hospital. They are very strict in this particular segment. Daycare treatment specifically, if someone is taken, they cannot file up for the cashless or reimbursement in all the category. Outpatient experience means like when they consult in OPD to any of the AYUSH consultant, just going and consulting for their basic need and coming and they can put a claim, they are not considering that. Until unless the patient or the doctor is able to fulfill the justified need of particular that thing. Might be some patient may require some surgical intervention, some procedural intervention that has to be proved, then only they will consider. And pre and post hospitalization. Patient may get admitted in private hospital or government hospital of AYUSH. The pre-hospitalization part, post-hospitalization part, they generally don't consider in their guideline. These are some exclusions they had mentioned from their side. As I told that eligibility criteria is very strict. The 24 hours of day admission is mandatory. Then treatment in government or government recognized hospital, either NAVH or QCI recognized hospital or recognized with any medical AYUSH medical college is requirement. So these are some basic criteria we have to fulfill as a hospital, as a doctor of AYUSH pathy. Then only they will consider. And IRDA has given a straight and a clear guidelines to all the private or the government insurance companies as well as the TPAs to follow the procedure in their, that is called SOPs, standard operating procedures, in their reimbursement or a cashless settlement of a treatment. So this is the basic thing what I want to highlight. If any question arises in anyone's mind, you can ask me one-on-one so I can answer your answers. Same thing like we do in allopathic mode of system. Patient has to justify that this particular treatment is mandatory. Just only for a diagnostic purpose, the patient cannot opt for the cashless facility. Same rules and regulations is following in this particular segment, in AYUSH segment also, that patient cannot be admitted in the hospital for a diagnostic purpose. Some therapeutical or the interventional procedure has to be performed, then only the cashless facility will be given by the private or government insurance TPA company to the claimant person. One of the important things is that is every insurance company is giving this policies, coverage and all that? No. The answer is no. Why? Because when you see the premium part of the insurance product, so all the private or the government insurance company, they do some add-on leverage on their premium. They charge something extra to cover all these things. Means
they are giving allopathic modern medicine treatment coverage also, plus if they are giving Ayush pathies treatment coverage also, or some other than modern medicine and Ayush coverage also, like ambulance services or pre and post hospitalization services also, they charge something extra in their overall premium. So it depends on private, government, and company to company, their product, how much they charge in their premium for this particular services. So they are not bound from government angle, but there are certain things they can do in their product. And another question is that, is one company in every product can do this? No. Again, company can have a product without Ayush treatment coverage, product with Ayush treatment coverage, maybe or may not with Ayush treatment coverage. So they are free from the government angle. Like IRDA has kept a liberty. So one company can have a different products in the market. So patient can opt for any one of them. So this is the most important criteria till now. Might be possible in upcoming days, like pre-COVID and post-COVID, the scenario has been changed totally, because many of the people has moved towards our alternative mode of treatment, and especially Ayush department. So the overall pressure on the companies, insurance companies and the government is too high for the alternative treatment coverage, because they had opted in a huge number, and still the number is getting increasing day by day. So might be some other changes in upcoming days. We will be noticing the things. So this is the some basic detail I want to highlight from my end about the insurance and mediclaim services. What is in current scenario, what is in practice. Yes, the numbers are very low. It's negligible. We cannot compare even with the modern medicine number about our Ayush reimbursement or cashless facility number. The effort should be made from all our fraternities, from every aspect, either to go in cashless, either to go in reimbursement. The awareness, first of all, in the practitioner's mind has to be created, then our patient's mind to be created, that the customer should demand for this. Until and unless things are not demand, they will be not respected at that level what we expect. So this is the takeaway of today's my point. Excellent, excellent. In brief, you have explained everything. Excellent, Very Dr. nice, Ritesh. very nice, sir. Very nice. Brief, beautifully you have explained everything, everything. Thank you, Dr. Ritesh ji. Thank you. Question answer session will be just after speaker session. So please stay with us. My question will also be there in the question answer session. That please guide us, all of the experts, which company will be better in all aspects. So now I would like to request Agnihotri sir for his comments. Thank you, sir. Thank you, Pawan Sharma ji. And thank you, Dr. Ritesh ji. It's my surprise to see that how short, how much in brief the things can be pointed out categorically. Really, you narrated all the things in nutshell. And idea is this, that the things which are there in regulations, I think they still need some modification, because each and every person who has got the insurance is not really benefited under these conditions. You see, it's a definite that OPD recommendations or expenses will not be incurred by the insurance company. But if it is necessary, there should be some relaxation. Or else it can be a business that everybody who will just desire will go and get it reimbursed and get it done. So just to control these things are there. And rest of the thing, as Professor Pawan Sharma, you told that what about the means other pathies bills like homeopathy or Ayurveda, etc. These will come in the discussion part. Thank you so much. Very, very nice presentation. What is actually situation, sir? Our pathies generally have daycare system, maybe Panchkarma, maybe Char Sutra even. We have the operation like Char Sutra, but that is also daycare. We don't force patient to stay in the night. That is our mistake. Sir, that is our mistake. So definitely I will come to question answer session, sir. Interrupting in between, sir. Just 2 points from the sir's point I just got in my mind. Just want to put it in front of you, not as a question answer.
Sir, one thing what you told about the insurance policy, like अगर हम हमारे हिंदुस्तान में बात करें तो insurance policy everyone sees like it's an investment. आज किसी ने 1 रुपया लगाया तो वो 2 रुपए कैसे निकाले उससे. Even though modern medicine में भी बहुत अच्छा claim settlement हो रहा है, लेकिन हर व्यक्ति की मंशा ये रहती है कि उसने 5,000 10,000 रुपए साल का इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा है, तो वो तुरंत 2 महीने 4 महीने 6 महीने में उसको कैसे निकाल ले. Just like car insurance. Yes, Car yes, insurance. yes. They consider like a liability. It is not their investment. It's a liability they are assuming. Another point is that in India, एजेंट ने बोला है आप पॉलिसी ले लो, आपको सिर्फ कार्ड लेके जाना है, सब कुछ कवर है. दिस इज अ मिथ सर. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग कंसेप्ट. Everyone, every agents or every insurance company subordinate or the person is telling, because everything cannot be included, not even in modern medicine, sir. There are a lot many things. Around 2800 articles has been listed by IRDA that are called a non-payable article list. You will be surprised, they are not giving approval for gloves. How without gloves a doctor can do surgery? Betadine, they deduct charges. HIV, HBsAg test, they are not reimbursement or they are not considering this because they consider this is a non-payable article. Again, the fight is going on for all this product. Daily hospitals are like facing all these smaller big issues. So this is our current state of our country, or we can say in Indian healthcare sector. But government says Very that right, these Yuvraj sir. HIV Very right. investigations are Definitely we there. will continue this discussion in question answer session, sir, because flow is disturbed in the speaker. Sure, sure. So I would like to invite Dr. Ambika Tiwari ji from UK, London. She is also BHMS. She is also very learned. Means I am considering him as our faculty today, definitely, because she is here to guide us. She is BHMS and heading a pharmacovigilance, BHMS, DNHE Indore, MBA Healthcare from Brunei University, London, and she is established there from last 12 years, working as senior pharmacovigilance specialist, Merck, GSK, iPharma, Lloyds. So very learned speaker we have, fortunately, recommended by Dr. A.K. Dwivedi ji. So again, thanks to him, I welcome Dr. Ambika Tiwari. Welcome. हेलो, प्रणाम हरिओम। सर, थैंक यू. प्रणाम, नमस्कार. मेरा नाम अंबिका तिवारी है और मैं पिछले 12 साल से यूके में रह रही हूँ और मैं जैसे आपने बताया, मैं एज ए फार्माकोविजिलेंस स्पेशलिस्ट यहाँ काम कर रही हूँ पिछले 4 साल से. और मैंने BHMS इंदौर से किया है. द्विवेदी सर हमारे प्रोफेसर हैं और थैंक यू आपने मुझे इनवाइट किया. आई एम वेरी थैंकफुल. So I'll start my conversation from my background, like as I'm working into pharmacovigilance, which means any type of complaint, any type of side effect which we get from the allopathic medicines, we make a record of it, we make a data of it, and then we process it and then we submit it to the health authority. And then we realize the weightage of the medicine, that it is worth to take or continue the medicine in the market or not, or shall we stop it. So there are many medication. For example, we have a very famous issue happened with the Johnson and Johnson baby powder, that their baby powder is causing some sort of cancer in skin and other type of diseases in the babies. So which comes with the data later on, because you need to use it for years and then you realize that this medicine is safe or not. So in the same way, like now people, they are going towards the Ayush medicine. Even in UK, people prefer to go with the natural type of medication like Ayurveda, homeopathy, and naturopathy, different kind of medications. But same like in India, here there are very few insurance company who give you coverage for the palliative, because they take these type of treatment as a palliative, not the first degree treatment for any type of condition. It's for the palliative type of treatment.
So what happened whenever you go to the doctor? First of all, you need to go through the NHS, which is the national, which is the biggest organization in the world, National Health Services in UK. And then they will refer you, and then it will take it. They take it as a palliative type of treatment. So for the palliative type of treatment, most of the insurance company, they will not give you any kind of funding, and they don't have any clause in their treatment that okay, we will provide, or we will consider these kind of, until it is there is no further medication is possible for the patient. It is a palliative, like in arthritis. There are few types of oil and few type of massages which are recommended in Ayurveda. So those kind of, but again you need to go through the NHS, the allopathic umbrella hub, and then only you can go further for the medication. So what happened, if you are suffering from any kind of problem, first you go to the hospital, then they will do all the formalities which will take time, and it doesn't come with the insurance. If you're going through the private, like if here the private is very expensive, a normal person, they can't go for the expensive type of treatment, because they charge you a lot. If you will go through the insurance company, then you should have that big amount with the insurance, with the insurer, that okay, we are happy to cover you for such a big amount, and then only you can go ahead, and then the treatment will be going on, and then you are not sure that they are happy to give you, if you want to take a palliative type of treatment for anything, or if you want to go, as if you expect that some sort of natural medication will help you as a cure, but it is difficult to get it. So this is something which I think even here government is working, especially like after the pandemic. Even here they will ask you to go for the natural thing, take the natural Ayurvedic thing, do the jal niti, and do take hot water, and other type of the natural medication things. So they will ask you to do that. So the people have started believing in those treatment rather than going to the allopathy. So this is what we have noticed in our care sector, that patient, they want to go where there is a low other type of side effects in your body. Like if you're taking anyway, allopathy is a chemical, and if you're taking it, it is not very it is not that smart that he know that okay, I have to work only on this organ, and I don't. They work in your entire body, and there will be a side effect for sure. So people, they want to come out of this cycle, and they want to stay healthier for a longer period without any medication. So definitely they want to go towards the Ayush type of treatments, but it is not that common to get those treatment through the insurance. You need to pay for it as a private, and I think government are working here on this. There are few companies who give you these kind of insurance, but you need to go through the again the NHS umbrella. The doctor, your GP, your general surgeon, he will refer you, and then they will see all the clause. Okay, we can't do anything, then only you have that way of going with the insurance. But privately you can go, and you can go ahead and you can get the treatment. That's very easy. So this is something which I have noticed here, and it is a big problem, especially in UK. Like in US, everything is private, so you have to pay for it. You are going through the normal, but here it's like everything is under the government, and you need to follow the rule. So they are working on it, especially after the pandemic. They know that what is the use of what is the benefits of going through the natural treatment rather through the allopathy, which we call the chemical treatment. So this is something which I have noticed, and I think here also government is working. And in India also, like Dr. Ritesh has mentioned, that every company, they are going ahead, and they are taking a step ahead to get uh, these kind of treatment into the line, and which is I think very, which will be I think very beneficial in future, that
it will give you a peace of mind that okay, whatever you are taking, it will only benefit you. There will be very less chances of having any side effect in prospect of my field, which is pharmacovigilance, and this is what I do. So whatever insurance and treatment I see in my point of view, it is very important that what kind of treatment we are taking, it should be safe, and it should be, we can consider it for the longer period of time. So this is something which I want to share my thoughts with everybody, and this is what I have noticed. Excellent, excellent, madam. Excellent. You have also completed very nicely and very briefly. Excellent. Their national health scheme is under government, so we can't do anything. But in India, definitely, government is not ruling this. And now the situation is in favor of our Ayush. So we should go ahead definitely. Thank you. Thank you very much. Yes, sir. So Thank now I you, would thank like you. to request Dr. Rajan Katavkar ji. Welcome, Dr. Rajan. He is Dr. Rajan ji. Give me a couple Welcome. of. Yes, sir. He is mission 2-in-1 for information of the audience. He is advocate also, and he is doctor also, and medical legal expert also. So welcome, welcome, Dr. Rajan. Welcome. Wow, great. You can go for slideshow. Slides are visible. Yes, sir. Yes, sir. Am I audible, sir? Clear, loud and clear. Thank you very much. First of all, You can go for slideshow to maximize the size of slide. my slides are visible. I have shared my screen. Slides are visible. PowerPoint is visible. If you will go for slideshow, this Yes. will be maximizing the size of slide. My slides are visible, sir. Yes. But thank not you. in slideshow mode. Not in slideshow mode. Okay. Okay. In PowerPoint Okay. mode. Okay. Yes. Okay. Yes. Great, great, doctor. Great. Welcome. Thank you. Thank you. First of all, I thank organizers and all distinguished people who have given me this opportunity. At the outset, I will congratulate my previous speaker, Dr. Ritesh Shah, as well as Dr. Ambika Tiwari. They were great speakers, and I have noted few points also, which were great input for me. Without wasting much time, I will start with my talk. Friends, I will talk today on insurance legalities regarding Ayush treatment. There are three perspectives: perspectives of doctor, perspectives of patient, and hospital owners, that is healthcare establishments. Insurance legalities are divided in three types. Before starting my talk, I will reiterate the points which Dr. Ritesh have told, that after 2013, government has pressurized IRDA and given some suggestion, and many insurance companies have started passing the claims of Ayurvedic treatment. There is a from 2006 there is more public awareness that many people have become aware of health insurance, and the claim policy claim insurance has rise. They are putting false claims also, and many insurance companies and many TPAs have a separate sale to cross-check our insurance claims. For example, I would like to highlight here, if you put fever with thrombocytopenia, they 200% they are going to cross-check your claim. So that is I have worked with many TPAs also for a few years, and it was great opportunity
to study how the people claim and how people take misadvantage of insurance companies. So to classify insurance legalities, there are three types of insurance. First is indemnity insurance for AYUSH doctors, which I am not going in much deep because it's a separate topic on which I am working since last 10 years. That is professional indemnity for doctors. So that perspective will be from AYUSH doctor. Another, health insurance reimbursement for AYUSH treatment. That will be AYUSH doctor's perspective as well as patient's perspective. I have taken treatment. Doctor, आपका claim pass नहीं होता है. It's a bad name for us also. That is showing that government is not recognizing acknowledging science. But nowadays, after 2012, there is a tremendous change. There are various government companies as well as private insurance companies who are passing our claims. I am coming naming those companies in my latter part of the presentation. And health insurance reimbursement for cross-party. Suppose I am a AYUSH doctor and I have given treatment for a fever using some antibiotics or something, some minor allopathic modality. So immediately those insurance company, they repudiate your claim. So that is AYUSH doctors as well as patients' perspective. These are three perspectives we are going to review today. On 30th, as I told in 2012, that from 2012 many insurance companies have started passing the claims. On 30th September 2016, Government of India, that is Ministry of AYUSH under Government of India, has passed some guidelines. The guideline number is T1 2016/13/2008 DCC AYUSH for insurance coverage to Ayurvedic treatment and settlement of the claim. That was on the basis of benchmark rates. All the rates were fixed on the various therapies. Snehan diya to kya hoga, Panchakarma diya to kya hoga. Everything was crystal clear in that guideline. What these guidelines says, I think the same guidelines Dr. Ritesh has shown. That was the same. So it is divided into 4 to 5 parts. On first part, it gives the eligible hospitals. So what are those hospitals? Central or state government hospitals, NABH accredited Ayurvedic hospitals. Friends, before last 3 to 4 years, there were very few accredited NABH accredited in the country. Even yes, many young dynamic Ayurvedic doctors have started their purely Ayurvedic health treatment, and they have accredited. That is really techno-savvy. Teaching hospital attached to Ayurvedic colleges recognized by central government as well as Central Council of Indian Medicine. Now we will label it as a National Commission of Indian Systems of Medicine. There was a restriction that there must be minimum 15 beds and minimum 5 registered eligible criteria. Then there must be adequate qualified paramedical staff, that is nurses and ward boys, which are dedicated to Ayurvedic therapy section. Means if you are keeping nurse, that nurse should be specialized in, if your hospital is Panchakarma hospital, that nurse should be specialized in your Panchakarma. She should be specialized in Brahma. She should be specialized in Siraved and so on. And you should keep daily maintenance record, and that should be digitalized, computerized format. Then they have given the different list of diseases, and a number of things. I won't go in much detail because if I touch to that topic, it will be my topic will be become more lengthy. I'll cut down. And after in third part, they have set benchmark costing of Ayurvedic therapies and treatment.
that is ceiling, maximum this much amount will be passed. And what is this fourth point tells the inclusion, what is covered, determination of treatment expenditure, expenditure, insurance coverage, that is inclusion. What is the criteria for settlement of health insurance claim for abject treatment? The benchmark rates in the previous point, they have set the rates. That is the maximum ceiling. Inclusive cost implication of the material, medicines, accessories. Please excuse me for spelling mistake, because in this slides are included in the very last 15 minutes. Equipment maintenance and manpower, pre and post procedural charges, room rent, etc. chargeable, that is equal to as per norms of the insurance company and policy. This is the omnibus septate. These are the 7 ingredients of insurance in AYUSH. First is insurance agent, then insurance company, sometimes, and then insurance broker. Sometimes insurance broker comes first and insurance company comes afterwards. Then TPA, then hospital service provider, then comes doctor, and the last is the patient or insured. The same can be depicted in this way. This is the omnibus septate. This slide, I have idea of this slide came to me when I saw one slide in diabetes, omnibus octet. This is recent change in the diabetes therapy. So there are 8 factors which are patient moves in an omnibus circle. So this is the omnibus septate. These are the 7 ingredients जिसके बीच patient घूमते रहता है. So these are the government companies offering the insurance coverage of insurance treatment. This is New India Assurance Company Limited, Oriented Insurance Company Limited, United India Insurance Company Limited, and National Insurance Company Limited. These 4 government insurance companies they have formed a General Insurance Public Sector Association. This is the address. And they have set a monopoly, and they have set the rates that for Kshara Karma or Agni Karma, they will set this much amount only, maximum. And doctors or the hospitals who wanted to avail those companies, they have to go to them. Unko naman karna hi padta hai. Now let us see what are the private insurance companies who offer coverage for AYUSH treatments. Tata AIG, Bharti AXA, Liberty Videocon, Reliance, Bajaj Alliance. Please excuse me for spelling mistake. Universal Sompu, Magna, HDI General Insurance Company, HDFC Ergo General Insurance Company, Apollo Munich, Star Health, and Cigna. Some of the companies, they don't agree to the rates which have set by GIPSA, and they straightway tell when patient is admitted in their hospital for some Ayurvedic treatment, ये मुझे Ayurvedic treatment लेना है. कि जैसे पक्षाघात के लिए maximum 4 weeks के लिए treatment agreed है, उसका रेट भी उन्होंने फिक्स किया है, वो जो मैंने रेगुलेशन दिखा उसमें. So what these companies tell, they have monopoly like Reliance and Apollo. They tell that your insurance coverage is maximum this much amount, and we will admit you if your claim, your expenses cross that, you have to pay the deposit, and we will extra money you have to pay from your pocket. Friends, whenever that there is a insurance company, and if you are admitting in that company, those companies have to agree GIPSA charges. It is totally bad policy what their practices they are doing nowadays. It is unfair trade practice. If any literate person, any literate patient can take them to the court of law, but nobody takes this law.
they take this route because it is little bit troublesome and किसी के पास उतना time भी नहीं है और पैसा भी नहीं है. But some people take them to the court of law and they set a landmark decision. There are few landmark decisions that many our Ayush doctors have went to the court of law and they have succeeded. Those landmark decisions I have, they will help us in the future. So there are ombudsmen. If any company is not passing your company, you can go to the ombudsman. For Maharashtra and area of Navi Mumbai and Thane, excluding Mumbai, there is one ombudsman at Pune. This is his address. This is Kelkar Road, Narayanpet, Pune. This is his telephone number. There is separate ombudsman for Goa and Mumbai metropolitan region. This is his address. It is at Santa Cruz. On 12th September 2019, Minister of Ayush under Government of India had called a separate meeting to review for all those things for insurance companies and to setting the maximum rates, how much rate should be passed, and these were people were called for the meeting. Additional Secretary, Joint Secretary, Advisor Ayurveda, Minister of Ayush, Advisor Unani, Department of Homeopathy, and these are Mukul Patel from Surat. He is a famous proctologist, and Sanjay Gawana is famous Ayurvedic gynecology from Pune. I know these people from since very beginning. I got to input what happened there. Dr. Amitabh Gupta from Paramount, and these were the companies were called and they gave inputs. We have set certain demands to all these insurance companies from Ayurvedic perspective. What should be there? Our first demand was all insurance company must entertain Ayush claims. It is now after 2012 there is a change, but not all companies are entertaining claims. So what we requested, all existing new health insurance companies and TPS thereunder must be compelled to entertain claim of Indian systems of medicine, mainly Ayurveda, Unani, Siddha and Savarikpa. But main claims are from Ayurveda only. Rise in charges. What they people set their benchmark charges for Ayush therapy mentioned in the regulation 2016 are so much lower than the actual costing. We have given the demand to rise in those charges. Demand number 3, uniform charges for Ayurvedic doctor as per allopathic doctor. For example, nowadays there are Ayurvedic doctor Shalya, MD Shalya also. They are also performing operation like appendicectomy and n number of operations, endoscopy they are doing. Some insurance companies are repudiating their claims, claiming that allopathic treatment given by Ayurvedic doctors. That should be rectified after seeing the regulations and amendments in the respective states. Many states, out of 39, all states, I think 15 to 20 states allow allopathic treatment by Ayurvedic doctors. That change must be conveyed to all states and all insurance companies and TPS thereunder, and those charges should be uniform, equal to the allopathic doctor and doctors of Indian systems of medicine. For same surgical charges should be passed at par with the allopathic doctors. For fourth demand, we had put that eligibility for the hospital for the Ayurvedic health insurance, minimum 15 beds. This demand was there, and there was a demand of minimum 5 Ayurvedic doctors should be there. So we had said that
out of 15, this demand should be, both the demand should be taken away, and minimum one doctor, specialist Ayurvedic doctor should be there. This should be, demand should be put. Demand 5, Ayush OPD per day care procedure must be included as allopathic daycare procedure, because many times many allopathic daycare procedures are included in many allowed by the many insurance companies, like cataract, ophthalmic treatment, many daycare therapies are agreed. Even dentist who extract tooth, patient goes home within 1 or 2 hours. Ophthalmologist operate for the cataract in 2-3 hours, patient goes home. So if their claims are passed, then why not our Panchaga treatment, proctologic Shar Sutra treatment, Agni Karma procedure, daycare should be procedure. They should be, hence the hospital admission should be waived, and the schedule of daycare procedure should be taken away. Minimum 1 day or 2 registered doctor, as I have mentioned previously. Minimum 5 registered doctors should be there. That restriction should be taken away. Integrated medical treatment should be included. In many states, I told you, in many states, integrated treatment is allowed. So that should be request included to include the integrated medical service under the general insurance or health insurance scheme. Thank you. These were the legal provisions. If there are any queries, we will take it at the end, as Dr. Sharma said. Thank you. Excellent, excellent, doctor. Excellent. Very nicely presented. Very nicely presented. Each and everything demand-wise. Very nice. Excellent. It has been conveyed to Minister of Ayush, Government of India, and I am personally in touch of the people who attended that meeting. That Sanjay Gawane, Mukul Patel, and even Dr. Manoj Nesri. He is my college mate only. Okay, okay. 1 year Okay. senior to me. Great, great, ji. Excellent. Very nicely explained, Dr. Katapkar ji. Very nicely. Thank you, thank you. We are on the other side because we are the consumer or we are the customer, either customer or consumer. But the seller or provider, facility provider, we have invited Mr. Sanjay Shaw. He is insurance expert, as we were talking about. So he can present the view of insurance company. So I would like to welcome Mr. Sanjay Shah from Calcutta. He is very renowned, and what it is told that multi-millionaire insurance agent. So welcome Sanjay ji, welcome. आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी बोल सकते हैं. थैंक यू सर जी. नमस्कार सभी को. नमस्कार, नमस्कार. और स्पेशली फॉर पवन शर्मा जी को जिन्होंने आज प्लेटफॉर्म दिया मुझे. मैं इंश्योरेंस एजेंट संजय कुमार साव फ्रॉम कोलकाता से. अभी फिलहाल मैं 2 कंपनी का इंश्योरेंस से काम कर रहा हूँ मेडिक्लेम में. इसके पहले जिन्होंने यहाँ पे वक्ता रखा, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ. उन्होंने बहुत अच्छी बातें रखी, बहुत डिमांड अच्छी अपनी डिमांडें रखी थी. और यहाँ उन्होंने जो बताया आयुष के लिए, जो उन्होंने बताया कि नेशनल इंश्योरेंस 4 कंपनी जो देती है, उन्होंने सही सब कुछ लिखा है. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी जो आयुष के लिए ट्रीटमेंट देती है, अभी मैंने इन कोलकाता उसमें अभी प्रोग्रेस कुछ नहीं हुआ है. आयुष के लिए अभी भी बहुत बैकवर्ड में हम लोग हैं. और उन्होंने रिम्बर्स के लिए भी वो लोग कहते हैं कि यार रिम्बर्स के भी करवा सकते हैं, लेकिन रिम्बर्स होता नहीं है. और उसमें कैपिंग बहुत ज्यादा कैपिंग रहते हैं, जो ये इस कंपनी के साथ जो काम करती है, और हम लोग इसमें सफर होते हैं. आयुष के लिए अभी तक उतनी खास कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है कंपनी में.
और दूसरी कंपनी में HDFC अर्गो के बाद से की तरफ से बोल रहा हूँ, मैं उनका भी एजेंट हूँ 2016 से। HDFC अर्गो अपने आयुष के लिए तो उतना खास कुछ नहीं कर पाई है, लेकिन IRDA गाइडलाइंस के अनुसार आयुष उन लोग का एक ही कहना है कि क्लेम वो लोग जितना भी क्लेम होंगे 100% क्लेम वो लोग पे करेंगे, यदि किस कंपनी से टाई अप रहा तो, उस हॉस्पिटल से टाई अप रहा तो। अब रह गया कि टाई अप का बात, तो बहुत कम नॉर्मल तो HDFC अर्गो से बहुत से कंपनी टाई अप है जो आयुष की ट्रीटमेंट देती है। अभी तक मेरी कोई अभी ऐसी क्लेम नहीं हुई है। मेरे प्राय 150-170 करीब मेडिक्लेम कस्टमर है जिनकी मैं सर्विस देता हूँ। तो अभी तक आयुष की ट्रीटमेंट किसी ने कहीं पे नहीं ली है। और हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी कंपनी है अपोलो, उसमें भी ये ट्रीटमेंट अभी आई नहीं है। उन लोग आयुष के वाले नहीं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि HDFC का क्या पॉइंट है वो आयुष के लिए। आपकी कोई भी इंश्योरेंस कंपनी क्या पॉइंट करती है कि भाई हम ये देंगे, ये नहीं देंगे? नहीं, HDFC अर्गो सर एक ही चीज बोलती है, यदि उस कंपनी से उसका टाई अप रहा तो आपका 100% क्लेम मिलेगा। यदि आपका बिल जितना भी होता है 100% क्लेम आएगा। किसी महाशय ने बताया था कि ग्लव्स हो, बीटाडीन हो, सब पैसा नहीं मिलता है। तो मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ कि HDFC अर्गो की एक पॉलिसी है ऑप्टिमा सिक्योर, उसमें उस पॉलिसी के अंतर्गत IRDA के गाइडलाइंस के अनुसार टोटली 100% पेमेंट होती है उसमें। यदि किसी का बिल 10 लाख का यदि होता होगा तो 10 लाख फुल पेमेंट होता है, इसमें 1 रुपया भी माइनस नहीं होता है। लेकिन उस पॉलिसी के फीचर्स ही वही है। और आयुष के लिए सर उसमें अभी तक खास अभी मैं कुछ क्लेम मेरे हुआ नहीं है, इसलिए मैं उतना बता नहीं सकता। लेकिन आयुष का ट्रीटमेंट के लिए वो लोग बोलते हैं यदि कंपनी से टाई अप है तो वो लोग फुल की पेमेंट करेगी। और जिस कंपनी टाई अप तो बात वो होती है कि आयुर्वेद के बड़े बड़े हॉस्पिटल हो तब टाई अप होगा, डॉक्टर से तो टाई अप करती नहीं है इंश्योरेंस कंपनी। हाँ, वही हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ सर। हॉस्पिटल से यदि हो आयुर्वेद के तो इतने बड़े हॉस्पिटल ही नहीं है, ये तो बोलना ही बेकार है। हाँ, तो अभी इसीलिए सर ये लोग का HDFC का एक ही नाम है कि आयुर्वेद का यदि कुछ होता है तो वो जो है आप लोग रिम्बर्स कर सकते हैं, लेकिन कैशलेस वाला फैसिलिटीज अभी भी नहीं दिया है। अच्छा, चलिए उसका ब्रोशर शेयर कीजिएगा कि क्या क्या रिएम्बर्स कर सकते हैं। हाँ ठीक है, मैं इसमें थोड़ा मैं एडिशन करना चाहूंगा सर जी। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है सर कि आयुर्वेद के कारपोरेट हॉस्पिटल होंगे, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। डेज आर चेंजिंग, डेज आर कमिंग। कि अभी ऑल इंडिया आयुर्वेद और अभी पवन जी 4 दिन पहले गोवा में और जाके आए, 3-4 आयुष के हॉस्पिटल खुले हैं एंड काफी फास्ट सभी चीजें बदल रही है। नो डाउट, हम तो उसकी आशा करते हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा राजेंद्र जी, बहुत अच्छा। भगवान करे ऐसा हो और जल्दी हो। सर ठीक ही बोला है। अभी आयुष के हॉस्पिटल काफी तेजी से हम लोग इंडिया में भी अभी हो रहे हैं। मेरे भी 2-3 फ्रेंड है जो आयुर्वेद में काम करते हैं, आयुष में काम करते हैं। उन लोग का भी एक ही डिमांड है कि धीरे धीरे इस कंपनियों के संग वो लोग सब टाई अप में जा रहे हैं, उनके मैनेजमेंट लोग सब जा रहे हैं कि ताकि सभी लोगों को मेडिक्लेम जो लेने चाहते हैं वो लोगों को सुविधा मिलते रहे, आयुष की ट्रीटमेंट सुविधा मिलते रहे। बहुत अच्छा संजय जी, बहुत अच्छा आपने बताया। आगे से हम आशा करेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या देती हैं कंपनियां, क्या नहीं देती हैं, वो हम सुनना चाहते थे आज। तो वो अर्गो भी यदि देती है तो क्या देती है, क्या नहीं देती है, पंचकर्म में देती है, डे केयर में देती है या हॉस्पिटलाइजेशन में देती है, सब पॉइंट हम डॉक्टरों के मन में घूमते रहते हैं। तो हम पेशेंट को क्या बताएं? यदि हम पेशेंट को बोलें तो क्या बोलें? और डॉक्टर का तो काम है, डे केयर का हमारा काम है। हम तो एडमिट नहीं कर सकते ना पेशेंट को। नहीं, हम लाने सर हमारे यहाँ पे सर कोलकाता में से 2-3 है आयुर्वेद के हॉस्पिटल है, मैं उनका नाम भी आपको शेयर कर दूंगा बाद में। इसमें लेकिन एडमिटेड होते हैं, पेशेंट आते हैं एडमिटेड होते हैं। और HDFC अर्गो बोलती है एडमिटेड होने के बाद ही क्लेम लॉन्च होगा। 24 घंटा, एक दिन जब तक नहीं होता है, 24 घंटे जब तक नहीं होता है तब तक कोई क्लेम लॉन्च नहीं होगा फॉर कैशलेस एंड रिम्बर्स बोथ। ये सबसे बड़ी गड़बड़ हो रही है संजय जी, हमारे आयुर्वेद में एडमिशन का ज्यादा सिस्टम ही नहीं। हाँ, जब तक बहुत बीमार ना हो आदमी तब तक एडमिट नहीं होता है। आपकी बात सही है एकदम सर।
अब धीरे वही धीरे होते जा रही है, ये सब आगे सब काम होगी, आशा चलिए, करते बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, ओके सर, थैंक यू बहुत ही सर। बहुत धन्यवाद। आप जुड़ते रहिए ऐसे ही वेबिनारों से और हमें नया नया ज्ञान देते रहिए। आशा करूंगा आगे से मैं भी जानूंगा क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है। बहुत धन्यवाद, बहुत ठीक बहुत है, धन्यवाद। विश यू थैंक ऑल यू द सर। बेस्ट। हरिओम अग्निहोत्री सर। यस सर, थैंक यू सर, नमस्कार। मैं बात शुरू करता हूँ। डॉक्टर अंबिका तिवारी के प्रेजेंटेशन थे और बहुत ही नटसेल में उन्होंने पॉइंट वाइज सारी चीजें क्लियर की, स्पेशली यूके में। और चूंकि वो इंडियन है इसलिए उन्होंने उनको इंडिया के भी सारी मॉडलिटीज और रिम्बर्समेंट के बारे में जानकारी है। ये सही बात है कि समय आ रहा है धीरे धीरे आयुर्वेद के जो रिम्बर्समेंट की बात है, आयुर्वेद ट्रीटमेंट की, वो बड़े अस्पतालों है, सब लोग जान ही रहे हैं। एट द सेम टाइम ये भी फिर उसमें एक रास्ता निकाला जाता है कि यार एनोरेक्टल के लिए, छारसूत के लिए या जलों का उपचरण के लिए, तो पहले हम उसकी बीएसटी बना लेते हैं, फाइल बनाते हैं, एक दिन उसको एडमिट रखते हैं और ये कहते हैं भाई आपको अगर मेडिक्लेम भी लेना है तो फिर आपको वो वाली कंडीशन भी फुलफिल करनी पड़ेगी, नहीं तो आप लॉस में रहोगे। डॉक्टर वही रहेंगे, ट्रीटमेंट वही रहेगा, हॉस्पिटल वही रहेगा, बट नुकसान आपका ये होगा कि आपका रिम्बर्समेंट नहीं प्रैक्टिकली हो पाएगा। तो मोटिवेट हो जाते हैं, ये भी करते हैं चलो भाई ठीक है, ऑन पेपर दिखला दिया, कोशिश करते हैं 10 बजे तक रहे, अगर कोई खास काम हुआ तो कर आए, मतलब 6 बजे चले गए, 10 बजे आ गए, नाइट स्टे किया। इस तरीके से दोनों का पेपर का भी काम पूरा होता है और मरीज को पैसे का आर्थिक नुकसान नहीं उठाना पड़ता है। लेकिन जहां तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जो बात की, राजन जी ने बात कही है, उसने तो ये आंखें खोली कि उनकी नॉलेज इतनी डीप है और इतनी गहराई से वो एक एक बिंदु को जानते हैं कि मैं समझता हूँ उनके नॉलेज और उनके आयुष डिपार्टमेंट मंत्रालय से जो भी डे बाई डे क्लैरिफिकेशंस आते हैं, उस नॉलेज के इनपुट के लिए मैं चाहूंगा कि महीने में एक बार उनके दर्शन जरूर हो जाएं, वो अपडेट दे दिया करें। तो हम लोग जितने भी हैं सब आयुष के तो आयुर्वेद के तो जुड़ते ही हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, बहुत सारे प्राइवेट प्रैक्टिस में है, हर एक के अपने क्लेमेंट्स मतलब हैं, तो क्लाइंटेज हैं, वो सब आते हैं तो उनको हम प्रॉपर डायरेक्शन दे सकेंगे और वहां बचा सकेंगे कि वहीं यहाँ तो आपको 10,000 का नुकसान हो रहा है और वहां दूसरी तरफ आप जाओगे तो आपके 12,000 पेमेंट भी नहीं खर्च होंगे और सारा काम हो जाएगा। हाँ, रही बात इंपॉर्टेंट, जैसे हमें संजय जी अभी कह रहे थे कि कई जगह ऐसा है, जैसे पहले वाले वक्ताओं ने कहा कि डिटॉल हो गया, माने गॉज हो गई, कॉटन बंडल हो गया या बीटराइन हो गया, ग्लव्स हो गए, इनका रिम्बर्समेंट नहीं होता है क्योंकि रफली ये यूज करते हैं हॉस्पिटल्स में। पेशेंट पर कितना इसका यूज होता है वो अलग बात है और ये निकाल देते हैं। मेरे को ऐसा एक्सपीरियंस है रामकृष्ण मिशन में भी, ओलीगंट में भी। ऑन अदर हैंड इनका नहीं हो जाता है। तो देखिए ये जो कंज्यूमेबल आइटम उस ढंग के हैं जहां पर कि न तो डॉक्टर का कंसल्टेशन वाली बात आती है, तो हाइजेनिक और दूसरी मैंने जिसको कहते हैं नर्सिंग केयर में कंज्यूम होने वाले मैटर है और बहुत ज्यादा कॉस्ट भी नहीं करता है। तो ग्लव्स आएंगे तो डॉक्टर यूज करेगा, तो इस हिसाब से वो प्लस माइनस है। अगर कहीं मिलता है HDFC या किसी के जरिए तो अच्छी बात है, और नहीं मिलता है तो जिस आदमी को 10,000 का रिम्बर्समेंट हो रहा है वो 150 रुपए या 500 रुपए का खर्चा उठा भी सकेगा। तो दोनों ही रास्ते, बट आप सब लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहा। और सॉरी इंटरप्ट करना चाहता हूँ सर। हाँ, बताइए बताइए। HDFC एर्गो की जो ऑप्टिमा सिक्योर बोले जो अभी नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है अभी जी 6 महीना पहले सर, हाँ। उसमें सर आपका जो नॉन कंज्यूमर गुड्स है उसके 100% पेमेंट मिलती है। बहुत अच्छी बात है आपके, बहुत अच्छी बात। मैं तो मैं चाहूंगा आपका और राजन जी का, दोनों लोग महीने में 40 दिन में एक बार जरूर दर्शन दे दिया करें, जिससे जो उनकी उस बीच में जो इनपुट हो गए वो इनपुट अगर हमें मिल जाएंगे तो हम लोग उसको आगे बढ़ा सकेंगे, उसका लाभ दे सकेंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज बड़ा अच्छा रहा कि समय से लोगों ने अपने कंसाइज्ड सबमिशन दिए, तो हमारे पास विद्वानों की पूरी टीम मौजूद है। आपसे बहुत सारे क्वेरीज भी करेंगे क्योंकि सभी कोई के पास मरीज आते हैं, मरीज कितना भी धनी हो तभी चाहता है कि उसका कम से कम पैसा ही खर्च हो, बाकी अगर उसने मेडिकल क्लेम की स्कीम ले रखी है उसको लाभ मिले, पॉलिसी का लाभ मिले। तो उस हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। तो जैसे कि प्रोफेसर पवन जी ने निर्देश दिया है, चारों का सबमिशन हुआ, तो इनका निर्देश है। ऑडियंस में से भी कोई ऐड करना चाहता हो केवल इंश्योरेंस के बारे में तो राइट, प्लीज खुद आगे आके हमें वो जोड़ दें गाइड जी, करें। जिसको हम ओपन डिस्कशन मान लेते हैं, लेकिन इनपुट्स में हमें ज्यादा लाभ मिलेगा, सभी को लाभ मिलेगा। जी तो मोस्ट वेलकम। अभी कुछ और लोग हमारे प्रोफेसर श्री राम जी हैं, डॉक्टर साहब मौजूद हैं, CP शर्मा साहब हैं, महेश शर्मा जिनके जी भी हैं, मन में कुछ भी इंश्योरेंस के जी, बारे में विषय हो, प्रोफेसर टू द प्रोफेसर पॉइंट अनूप गुप्ता बात, जी भी जुड़े फोकस्ड हुए हैं बात। जी। जी मैं आग्रह बताइए। करता हूं सभी विद्वानों से कि कोई भी हमें कुछ गाइडेंस यदि देना चाहे कि इंश्योरेंस में ये होता है या ये होना चाहिए,
या ये करते हैं? कोई जानकारी हो तो जरूर हमें बताएं। मैं बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगा सर। एक जो पॉइंट पे भी डिस्कशन चल रहा था, अग्निहोत्री सर जो भी पॉइंट छेड़े थे, प्लस मेरे सहवक्ता संजय जी ने जो पॉइंट कहा, जो बीटाडीन ग्लव्स वाला जो पॉइंट था वो मेरे द्वारा ही रेस किया गया था। मैं थोड़ा सा और उसको क्लेरिफाई करता हूँ, शायद संजय जी के अंडरस्टैंडिंग में या उनके इसमें कुछ डिफरेंस आया है। मैंने ये कहा कि इंश्योरेंस की भाषा के अंदर देयर आर नॉन पेबल आर्टिकल्स, ये IRDA की गाइडलाइन है। नॉन पेबल आर्टिकल्स में उन्होंने एनलिस्ट करके रखा हुआ है कुछ आर्टिकल्स को जो उनको कंसीडर नहीं करते हैं। अच्छा, ये सारी कंपनी के लिए गाइडलाइन एक जैसी है, बट कुछ कंपनीज ने अपनी पॉलिसी का प्रोडक्ट बेचने के लिए, चूंकि कॉम्पिटिटिव मार्केट है, कोई प्राइवेट इंश्योरेंस प्लेयर है, कोई गवर्नमेंट इंश्योरेंस प्लेयर है, तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट को एक दूसरे से कॉम्पीट करने के लिए कैसे कस्टमरों को रिझाए, उन्होंने इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स के क्राइटेरिया को वाइड कर दिया है। तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, जो गाइडलाइन में डिडक्ट करने के प्रोडक्ट है हम उसको भी कवरेज दे देंगे, बट उसके लिए उन्होंने 5% प्रीमियम में, 2% प्रीमियम में एड ऑन कर दिया। तो इट डिफर, जो सर ने कहा, अग्निहोत्री सर ने, इट डिफर फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, it differ from company to company. I had quoted a point of IRDA guideline. IRDA guideline applicable for all the insurance company, but it's a individual company's discreta कि वो उसको अपनाती है, वो अपने कस्टमर को बेनिफिट देना चाहती है, लिमिटेड बेनिफिट देना चाहती है, पूरा बेनिफिट देना चाहती है। नहीं, सही बात है, मैं इनके बात से सहमत हूं। थैंक यू सर, बहुत अच्छा क्लियर किया आपने जी। आपने हिडन फैक्ट बता दिया, दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्लेम charge the money from the patient or the customer. इतनी बड़ी लिस्ट है सर, ये ठीक बोल रहे हैं रितेश जी, ये इतनी बड़ी लिस्ट है पूरी की पूरी IRDA की नॉन पेबल आइटम्स की। सर हम डेली सर मॉडर्न हॉस्पिटल में काम करते हैं और ये रोज का है सर प्रॉब्लम। हम आयुष ट्रीटमेंट के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन सर मॉडर्न मेडिसिन जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम में एक एस्टेब्लिश प्लेयर है, लेकिन उनमें भी इतने रोज के इतने चैलेंजेस हैं इन चीजों को लेकर के कि सब कोई परेशान रहते हैं, बिकॉज नो वन वांट्स टू पे फ्रॉम देयर पॉकेट, और डिडक्शंस रोज आते हैं, चाहे कैशलेस हो चाहे रियम्बर्समेंट हो। बिल्कुल ठीक कहा, बट इट्स वेरी फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी टू कंपनी, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। रितेश शाह सर, आपका नंबर शेयर कीजिए ना चैट बॉक्स में। वो मैं दे दूंगा, चिंता मत कीजिए। वेबिनार टाइम पर बंद कर, और किसी का कोई कमेंट हो तो मैं स्वागत करूंगा। स्वागतम। कोई श्रीराम जी कुछ बोलना चाहेंगे? डॉक्टर श्रीराम शर्मा जी, श्रीराम जी आपका स्पीकर खुला हुआ है। श्रीराम जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? किसी और ऑडियंस से मैं विद्वानों को आमंत्रित करता हूं कि इंश्योरेंस के विषय में यदि किसी के मन में भी कुछ है तो प्लीज शेयर करें। सर, ऑडियंस में एक डॉक्टर राधिका खाटौट है, शी इज फ्रॉम बैंगलोर। शी इज वेलकम वेलकम डॉक्टर राधिका, वेलकम। हाँ, नीमा के इंचार्ज है कर्नाटक स्टेट के। उन्होंने चैट बॉक्स में कुछ डाला है कि बहुत लोगों को का इंश्योरेंस के क्लेम के बारे में पता नहीं है। देखता हूँ अगर मैडम है तो है मैडम, वेलकम मैडम, वेलकम। Good evening, sir. Good evening, sir, and thank you, sir. She is very dynamic person, na sir? Oh, thank you so much, sir. Not that dynamic also, sir. See, we are learning a lot of things from you, and we are thankful that you people are there to help us all the time. Sir, actually, मेरा एक सवाल था. So, is there any provision for foreigners or NRIs who want to take Ayurveda treatments here? So, उनके लिए कुछ provisions है, sir? नहीं, उनका तो इंश्योरेंस उनकी कंट्री का होगा ना। That's what, sir. Like हम लोग अगर चाहे तो, is there any of that policies where they can take? जैसा कि medical tourism में आता है ना, most of the people they come to India because it's very lesser cost here.
तो अगर आयुर्वेदा ट्रीटमेंट्स लेने के लिए जब आएँगे वो, तो कुछ उनके लिए प्रोविजंस है अपने तरफ से? अपनी तरफ से मैडम मतलब आई विल आंसर दिस क्वेश्चन शैल आई Yes, sir. Sure. See, medical tourism, I also work in that also, medical tourism. Generally people who come here under the medical tourism, तो उनका जो पैकेज है वहां से वो कंट्री का या वो जो कंपनी का उन्होंने पैकेज लिया है, अगर उसमें अगर इंक्लूडेड है तो दैट इज इंक्लूडेड. अगर यहाँ आने के बाद में इफ दे कैन टेक ट्रीटमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जैसे कि बॉम्बे में है, many people from all over country and many foreign people countries also they visit. बॉम्बे में पोदार हॉस्पिटल है, अभी दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा हुआ, जामनगर में है. देयर आर मेनी रिनोन्ड इंस्टीट्यूट. they can approach there and they get very standard and recognized treatment. I think that is the only way, or otherwise pay and smile, they can treatment in a private hospital also. This is my answer to your question. मतलब what I understood. Sir, और जी, I want to add. आपको सुझाव देना चाहिए. I want to add one point to your point, sir. What madam is asking. Madam, there are certain insurance policies who are globally accepted, or outside country policy. They have a merger with Indian insurance company, so they give a global coverage. So the same principle is applicable for modern medicine. If someone is coming or traveling from abroad to India for medical tourism ground, they have to apply for enlisted narration of the treatment. Like either they are going for a knee replacement or hip replacement, whatever the treatment. Same, I think, I'm just giving a possible chances. They have to narrate to their health ministry or their visa licensing company that they are going for an alternative mode of treatment in India. So they will get a visa permission on the behalf of that. One. Second thing is that once they will come, their insurance company, if having a global presence of coverage, they will cater that kind of treatment either in cashless or either in reimbursement mode. Okay, sir. Thank you so much, sir, for this And information. one more thing, I think there is one committee under which all hospitals who give service under medical tourism, I think they have got, they might be having Ayurvedic department, so which might be they can avail. So they have to inquire before landing to India whether that treatment is available or not. Because many people come here for surgery and afterwards they go to Kerala and get medical treatment. I know many people. I can provide you the list also, madam. Okay, sir. Many people do that. There are many resorts in Konkan, even Bombay also, who provide the treatment to people who have undergone surgery, right from TKR or cardiac surgery also. In recuperating period, they can take this treatment. Okay, sir. Yes, sir. Sir, Very right. Very right. Yes. one more question, sir, if you just give me permission to ask Please you. tell. सर, ये जो होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो एम्प्लॉयज होते हैं, वो बताते रहते हैं कि उनको आयुर्वेदा मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं व्हेन दे गो फॉर सम, जैसा कि अपना ईएसआई फैसिलिटीज है, वैसा आयुर्वेद के लिए CGHS. yes, That is, CGHS. I will tell. I am authorized medical attendant under. Let her ask the question. Let her ask the question. Madam, पूरा कीजिए. सर, यस सर. तो वो जो ईएसआई फैसिलिटी होता है ना सर, सो हम लोग जब लिख के देंगे तो वो लोग कैन दे क्लेम फ्रॉम द ईएसआई सेइंग दैट दिस आयुर्वेदा ट्रीटमेंट्स आर टेकन एंड we need the reimbursement for this kind of treatments as a outpatient also? I can answer you, madam. Yes, sir. Fortunately, I am authorized doctor in CGHS. Okay. And good, also sir. I am panel doctor of ESI also. So fortunately, the answer is yes. Only thing you have to prescribe them, and afterwards, after purchasing, you have to reimburse. You have to stamp that yes, I have advised, and purchase bill at the back side you have to endorse that you have purchased. That's all. If you are, but the thing is that should be passed by the authorized medical attendant, that panel doctor. Fortunately, I am panel doctor for central government, and I am proud to mention
here. I struggled for 15 years for this empanelment. Oh, They were good, sir. not allowing me that. I did the correspondence for 15 years. I tapped every door, knocked every door, and afterwards I opened it for all Ayush doctors. Thank you. That means the patient has to go to CGHS and then get the written thing from Yes, there yes. saying In they can Bangalore, I purchase think there from are us. many, CGHS has its own doctors. Yes, or sir. I think there are private doctors I also. hope. Ji sir, ji sir. So this is applicable on OPD's recommendation Yes, sir. as far as the reimbursement is concerned. Reimbursement is only yes, for yes. OPD also, sir. Right, right. So one point For which central government also, for state government also. yes, right. So one point which Dr. Madam raised is that as far as the medical tourism is concerned, so it could only be possible provided if that country authorities are willing and known, and the companies are willing and known to get their customers treated by Ayush system of medicine in India. If they are not recognizing, not promoting, then it is of no use. Again, they will have to pay from their pocket. So Definitely. allowed on means visa basis is so important that that government or the that sir. state, that nation should also recognize Right. our pathy and allow to go for this tourism, medical tourism. Thank you. Thank you. Very right, sir. Very right, sir. सर So इससे with ये us- पता लगता है कि जी। सॉरी सर टू इंटरप्ट यू जी जी एक्चुअली जी, इससे ये पता लगता है brief. लाइक आयुर्वेदा इट्स नाउ रीचिंग वर्ल्ड ओवर तो Definitely. इसमें बिकॉज ऑफ दिस लैकिंग ऑफ ऑल दीज इश्यूज ना उसके वजह जी, से वी दो वी आर हैविंग द कैपेसिटी टू गेट लॉट ऑफ बिल्कुल ठीक कहा। मेडिकल टूरिज्म से बहुत सारे पेशेंट आ सकते हैं बट ये इसके वजह से बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी हो रही है कोई आता नहीं है लेता भी नहीं है ट्रीटमेंट एंड बिल्कुल एवरीबडी ठीक। पे फ्रॉम देयर पॉकेट्स राइट तो इसके थ्रू कुछ करना भी जरूरी होता है सर जी 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 बिफोर फिनिशिंग नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट फ्रॉम लंदन डॉक्टर नवीन गुप्ता जी विद अस वेरी रेनाउंड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर इन यूके एक्सक्यूज मी सर हाँ बोलिए सर एक क्वेश्चन था मेरा सर जैसे सीजीएचएस का भी आप बता रहे हैं तो मेरे पास भी सीजीएचएस की फैसिलिटी है लेकिन वहां पर जब हम जाते हैं तो आयुर्वेदिक सेक्शन में वो ये कहते हैं कि जो अवेलेबल मेडिसिन है वो हम आपको दे देंगे बट वो प्रिस्क्राइब करके कोई ऐसी मेडिसिन नहीं देते हैं अगर वो देते हैं तो वो हमें अपने पैसों से ही लेनी रहती है मतलब उसका रियम्बर्स वो लोग नहीं करते हैं तो बिल्कुल इसका ठीक बोले आप। तो सर इसमें क्या करना चाहिए हमें उनको बोलना चाहिए कि ये प्रोविजन है रियम्बर्समेंट का नहीं रियम्बर्समेंट का प्रोविजन डेफिनेटली है सीजीएचएस में भी है और ईएसआई में भी खत्म मैं कर बोलूं दो। सर हाँ बिल्कुल बट लेकिन सर थोड़ा वो ब्रीफ रहे 10:30 बजने वाले हैं थोड़े थोड़े ब्रीफ बोलते चले हम लोग तो नहीं बस सर हमें आप ब्रीफ नहीं सर शॉर्ट में ही बता दीजिए तो मैं क्या उनसे नहीं बोलूं उनकी बोल रहे हैं हम खत्म कर वेरी सकते सिंपल मैडम जिसको अगर उनके स्टॉक में अगर वो दवाई नहीं है जी तो सर उनको जो डॉक्टर है उनसे वो कॉरेस्पॉन्डेंस करना चाहिए कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है अनलेस जी सर आप डोंट ट्राई तो कोई ना आपके लिए दरवाजा खोलने वाला है नहीं आपको बोला मैंने सीजीएस में 15 साल मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस किया है और वो दरवाजा खोला है सिर्फ डॉक्टर्स के लिए डॉक्टर राजन जी आप ये क्लियर कर दीजिए ना फॉलो अप पर डॉक्टर राजन जी आप ये क्लियर कर दीजिए कि क्या सीजीएचएस Yes. के द्वारा ऐसी कोई लिस्ट बनाई गई है जिसमें जो दवाइयां उनकी ओपीडी या उनकी डिस्पेंसरी में उपलब्ध नहीं है उस लिस्ट से अगर ऐसी कोई prescribe की लिस्ट जाएगी तो तो नहीं है रिम्बर्स हो जाएगा अभी क्या है वो ये भी तो गवर्नमेंट restriction होगा ना कहीं पर डिपार्टमेंट है जैसे कि सर अभी जैसे हमारा सिविल हॉस्पिटल है उनका परचेज डिपार्टमेंट रहेगा वो ऊपर का जो सिविल सर है वो डिसाइड करेगा कि ये लिस्ट हमको परचेज करना है तो आई थिंक द जिसके लिस्ट हाथ माइट बी लेआउट से नहीं सर इसका मैं बोल रहा हूँ सर काइंडली मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग ऐसे ही गलत होता है लाइन पे चले जा रहे हैं कहाँ हम इंश्योरेंस की बात कर रहे थे कहाँ हम रियम्बर्समेंट पे आ गए लेकिन सीजीएचएस हर साल टेंडर इशू करता है और सब बड़ी कंपनियों की दवाइयां सीजीएचएस में रहती हैं राइट फ्रॉम हिमालय झंडू टावर वो बड़ी कंपनियों की ही लेता है सीजीएचएस की एक बड़ी विराट लिस्ट है हाँ ये बात उनकी मैडम की बिल्कुल सही है
कि वो दवाइयां अवेलेबल नहीं रहती हैं हर जगह, ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन टेंडर के हिसाब से सबसे बड़ा टेंडर देने वाली गवर्नमेंट की संस्था केवल CGHS है, जो सबसे बड़ा टेंडर देती है, क्वालिटी को वेरीफाई करती है, कॉमर्स को वेरीफाई करती है, फिर वो अप्रूवल देती है। और उसके बड़े नखरे हैं कि साहब उसका इतने कम से कम इतना टर्नओवर हो, क्वालिटी कंट्रोल हो, बड़ा डिटेल में है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि CGHS में नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ, ये और दूसरा क्वेश्चन आया कि क्या रिएम्बर्समेंट होता है, तो वो CGHS से मतलब नहीं है। जहां CGHS की डिस्पेंसरी नहीं है वहां भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग रिएम्बर्समेंट लेते हैं। ये मैं आज से नहीं, पिछले 35 साल से देख रहा हूँ। मेरी मदर सुपरिंटेंडेंट थी, तो उनके पास कई सेंट्रल गवर्नमेंट के पेशेंट आते थे और वो फोर्स करते थे कि सर हमको गोल्ड खिलाओ। अब ये बड़ा अजीब सा लगता था उस समय बचपन में सुनने का कि क्यों गोल्ड खिलाओ, क्योंकि वो रिएम्बर्समेंट ज्यादा होगा। तो ये रिएम्बर्समेंट का सिस्टम है। एक दिन हम वेबिनार रिएम्बर्समेंट पे रखें, जी सर, कौन कौन बिल्कुल, थैंक यू, रिएम्बर्समेंट देता क्या है, बात है, क्या और बात है। थैंक है यू ना। सर, थैंक यू। हाँ, वो वाली बात बहुत अच्छी उठी है। लेकिन आज थैंक यू मैडम, रिएम्बर्समेंट सिस्टम क्या है अपनी हेल्थ स्कीम में। आज तो गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा नो कैश आयुष्मान कर दिया है, लेकिन वो आयुष्मान में हमेशा याद रखिए चैरिटेबल कैंप्स में वेल टू डू फैमिली के लोग नहीं जाते। उसमें वही लाइन लगाते हैं जो बेचारे बिलो द लेवल है। लेकिन जी, जी। जनरली जो वेल टू डू है वो चैरिटी कैंप में जाके और अपनी दवाई नहीं लेते, तो वो पैसे से ही लेते हैं। वो अनफॉर्चुनेट है कि वो ईमानदार है, पैसा खर्च करते हैं, लेकिन उनको रिएम्बर्स नहीं होता। लेकिन ये होता उन्होंने करना है, स्टेट चाहिए। गवर्नमेंट के लिए भी सर होता है और ESIS में सेंट्रल भी होता गवर्नमेंट। है, ESIS में भी होता है सर। हाँ, होता है, होता है। आई एम पैनल डॉक्टर इन ESIS ऑल्सो। जी जी जी, बिल्कुल होता है सब, बिल्कुल होता है। नवीन गुप्ता जी, स्वागतम। फाइनल कमेंट्स नवीन गुप्ता जी से। डॉक्टर नवीन गुप्ता जी, आर यू कंफर्टेबल? वैद्यराज नवीन गुप्ता जी फ्रॉम मेरी चैट बॉक्स में है है नवीन गुप्ता लंदन, UK। वेलकम सर। जी। शायद वो अभी कंडीशन में नहीं है। कोई और कुछ भी यदि गाइड करना चाहे। उनके बिहाफ पर रश्मि गुप्ता जी ने पूछ तो लिए हैं सवाल, और सो मेनी सेटिस्फैक्टरी जवाब भी उनको मिला है। नवीन जी ने चैट बॉक्स पर अपना रिएक्शन दे दिया है। वैद्य जी सामने श्री राम जी अगर कुछ कहना चाहें, या मैडम हमारी साधना जी कुछ कहना चाहें, कोई उनके एक्सपीरियंस है तो। हाँ, उन्होंने आ दिया कि शायद उनके नहीं पास। है, अपने 10:30 भी बज रहे हैं सर। यस अपना यस यस, हाँ यस, आई एम वेरी केयरफुल फॉर टाइम एंड आई थिंक दिस इज द टाइम टू कंप्लीट इट। जी सर, जी सर। नमस्कार सर, आप सभी को, पवन शर्मा जी, मैडम नमस्कार, अग्निहोत्री मैडम जी, नमस्कार। नमस्कार सर। जी सॉरी, मुझे नमस्ते। आज थोड़ा लेट हो गया ज्वाइन करना। नहीं नहीं, आज का विषय सर आयुर्वेद के लिए और आयुष के लिए बहुत बड़ा विषय है सामाजिक दृष्टिकोण से, क्योंकि जब हम ट्रीटमेंट या कुछ लेते हैं उसका रिएम्बर्स मिलना चाहिए। ये जो इंश्योरेंस वाली बात है, तो सबसे पहले तो इसमें हम 2 कैटेगरी कर सकते हैं, OPD और IPD। जैसे अभी हमने बात की है CGHS में OPD लेवल पे जो मेडिसिन मिलती है, तो CGHS में आयुर्वेद OPD है और वहां पे डॉक्टर्स है, मेडिसिन है, पर CGHS छोड़कर बाकी जगह नहीं है। जैसे मेडिकल कॉलेज, आयुष के कॉलेज जितने भी है या मेडिकल कॉलेज है, वहाँ आयुर्वेदिक OPDs नहीं है। आयुर्वेदिक OPDs जो है वो कॉलेजेस में है, आपके जिला परिषद और इनके जो है वो OPDs है। अब कॉलेजेस के जो OPD में जो भी ट्रीटमेंट लेंगे तो उनको एक्चुअली रिएम्बर्स मिलना चाहिए, पर वो मुझे नहीं लगता कि कोई कॉलेज में है। मैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा आयुर्वेदिक कॉलेज इन हॉस्पिटल भोपाल में थी, 1-2 साल वहां काम किया। वहां पर CGHS के लिए, IPD और पंचकर्म के लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे थे, पर उनको चाहिए NABH। जब तक NABH हॉस्पिटल आयुर्वेद के हम नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी इसमें जा नहीं सकते। CGHS का पूरा प्लान था जिसमें स्नेह स्वेदन से लेके पूरा पंचकर्म की पूरी क्रिया का उन लोग
रेमल्स देते हैं जितने सीजीएचएस के कर्मचारी है, तो उसके लिए एनएबीएच की तैयारी हमें चाहिए। हमारा हॉस्पिटल उस लेवल का करे कि इंश्योरेंस कंपनियां हमें अप्रूवल दे। जब तक इंश्योरेंस कंपनियां अपने हमें अप्रूवल नहीं देगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी काफी जगह तैयारी चालू है एनएबीएच की, तो सभी कॉलेजेस ने, ये हॉस्पिटल ने एनएबीएच कर लेना चाहिए। ये बात हम लोगों ने लास्ट 2-3 दिन पहले भी बात की है कि प्राइवेट हॉस्पिटल और जिनके पास 5 बेड है, जिनके पास 50 बेड से ऊपर है, उन्होंने एनएबीएच की पूरी तैयारी करके उस कैटेगरी का, उनके जो नॉर्म्स है वो नॉर्म्स पूरे करे, तो हमें कोई नहीं रोक सकता कि हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में आने वाले पेशेंट्स को इंश्योरेंस मिले जितना भी हम, क्योंकि आज हमारी भी जो ट्रीटमेंट है काफी महंगी है। हमें 1-1 महीना 2-2 महीना ट्रीटमेंट देनी होती है, पंचकर्म हो या बाकी कुछ भी हो। मेडिसिन भी बहुत महंगी है ना, रस औषधि तो सुवर्ण और धातु वाली सभी महंगी है। ये जो मेडिसिन हम देंगे तो उसके रिएम्बर्स रुग्ण को होना चाहिए, पर उसके लिए पहले हमारी तैयारी चाहिए कि हमारे हॉस्पिटल उस लेवल का होना चाहिए। एक शंकर दयाल में एक ही हमने आइसर का पैनल पे कॉलेज हॉस्पिटल था, तो उनको वहां से मिलता था, यानी वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही उनको देती थी। 80-90 हजार मैंने उनसे निकाल के दिए पूरा पंचकर्म के लिए, क्योंकि वहाँ मैंने उस दिन भी बताया था कि कंप्यूटर पे काम करके उनका जो आई का प्रॉब्लम हो गया था, ड्राई आईज, हेडेक, निद्रा नाश, तो उसकी पूरी पंचकर्म की जो ट्रीटमेंट थी वो उनको मिली, क्योंकि वो पैनल पे थे। पर एक संस्था पैनल पे होने से नहीं चलेगा ना, समाज में हमें रहना है, आयुर्वेद को बढ़ाना है, तो हम लोग, हमारा जो स्टैंडर्ड है, उनके जो स्टैंडर्ड लगता है एनएबीएच, वो हमें करना चाहिए। ये अभी परसों बात बहुत डिटेल में हुई मैडम। एनसीआईएसएम का जो प्रिंसिपल कॉन्क्लेव था, उसमें एनसीआईएसएम ने क्लियर कट गाइडलाइन दी है सभी को कि आप लोग एनएबीएच के लिए जाइए। बिल्कुल सर, जाना भी यदि चाहिए। हर प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज या आयुष कॉलेज एनएबीएच हो जाए तो झमेला ही मिट जाए, झमेला ही मिट जाएगा ना। आयुष्मान कार्ड भी हमारे यहाँ चलने लग जाएगा ना। बिल्कुल। आयुष्मान तो कोई ऐसा नहीं है कि वो गवर्नमेंट जॉब में ही है, वो तो कॉमन पीपल सबके लिए, लो ग्रेड वाला जितने हैं, जिनके पास येलो राशन कार्ड है, रेड राशन कार्ड है, उनके लिए आयुष्मान है। बिलो पॉवर्टी वालों के पास, तो उनको ज्यादा फायदा हो जाएगा उसके लिए। जी हाँ, जी। धन्यवाद सर, आप लोगों ने चांस दिया, और आपको सबको नहीं, नमस्ते। आप लोग एक्सपीरियंस्ड आदमी है, प्रैक्टिकल करके देखे तो सीखने को मिलता है मैडम। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। और कोई विद्वान यदि कुछ सुझाव देना चाहे? डॉक्टर लीना, श्रीराम जी, मंगला जी, आई होप ऑल कमेंट्स आर ओवर। एक दिन सर, आज की बातों से एक बात बड़ी अच्छी उठी कि हमको गवर्नमेंट रिएम्बर्समेंट सिस्टम, इस पे भी एक बार अपन करें नॉलेज सेशन। मैं खटवकर साहब को उस दिन भी आमंत्रित करूंगा, डेफिनेटली सर। थैंक यू सर, मैंने एवरी क्लेम, मैं बहुत से लोगों का क्लेम जो रिपीडिएट होता है, रिफ्यूज होता है, मैं एक भी छोड़ता नहीं हूँ। आई गो टिल सक्सेस। क्यों नहीं आयुष का? ग्रेट सर, ग्रेट। सर एक रिक्वेस्ट और करूं आपसे सर। हाँ बोलिए ना गुप्ता जी। सर जितने भी सर ये हॉस्पिटल हैं, आप देखिए जो एलोपैथिक हॉस्पिटल है ना, कुछ में तो जैसे सर सीजीएचएस है, वहां पर एक आयुर्वेदिक सेक्शन है, लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे हैं या जो ये सर डिस्पेंसरीज होती है ना, इनमें आयुर्वेदिक सेक्शन नहीं है, होता ही नहीं है सर, कोई डॉक्टर ही नहीं है। तो ये मेरी सर रिक्वेस्ट है सर, आप लोग जहां पर हैं, मतलब इतनी ऊंची जगह पर, नहीं तो अभी आप शुरू लोग हो सर गया मैडम अब शुरू हो चुका है। हर जी पीएचसी में एक आयुर्वेद डॉक्टर की नियुक्ति हुई है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में। पैसा आधा देते हैं वो, 25,000 30,000 ही देते हैं आयुर्वेद डॉक्टर को, उससे काम एलोपैथी का ही लेते हैं वो। ये दोनों बात फैक्ट है, ये आपकी बात सही है, लेकिन नियुक्ति हो चुकी है, एक नहीं शुरुआत हुई सर, है। एलोपैथिक का काम नहीं लेना सर, तब तो फिर हमें कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि हमारी तो स्थिति वहाँ नहीं हो आयुर्वेद जाएगी। की मेडिसिन ही नहीं है ना मैडम। हाँ तो सर वही तो करना है हमें, तो सर नहीं आयुर्वेद को वो प्रमोट करना है ना, डेफिनेटली, हमें लेकिन एक एलोपैथिक को थोड़ी शुरुआत हुई करना है, है। जी एक अच्छी शुरुआत हुई है कि जी जी कम्युनिटी जी हेल्थ ऑफिसर सब जगह जाने लगे हैं। वहां जी उनके 3-4 रोल हैं,
वो मेडिकल ऑफिसर के रूप में भी पीएससी में अब बैठ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आशा करता हूं कि 10 साल बाद वाकई में स्वर्णिम युग होगा। थैंक यू हमें सर। दुख होगा, हम लोगों को दुख होगा कि हम इतनी जल्दी बूढ़े क्यों हो गए। हमने अपने यंग एज में क्यों नहीं आयुर्वेद का भविष्य देख पाया, दरवाजा आयुष आधा का। तो खुल गया है, दरवाजा कोई आधा। नहीं सर, कोई नहीं सर, हमारे बच्चे देखेंगे, कोई बात नहीं। जय हो, जय हो, जय हो। आप कहाँ से हैं रश्मि जी? सर मैं दिल्ली से सर। अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वेलकम, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। सर दिल्ली में नीमा दिल्ली के मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ अभी तक। अरे क्या बात है। रश्मि जी, मैंने शायद सर। डाला है नीमा में, नीमा का मेडिको लीगल सेल का मैं कन्वेनर हूँ ऑल इंडिया। अरे वाह। आपके बहुत आपके पूरे जो दिल्ली के जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है वो मेरे जी। खास है। डॉक्टर एमएल गुप्ता सर, डॉक्टर छाबड़ा सर, अनिल गुप्ता है और सभी डॉक्टर लोग। छाबड़ा है, डॉक्टर वेद सर हैं। मैंने अपना वेद, फोन नंबर आप चैट बॉक्स में डाल दिया है। वेद जी सर। यदि आप लोगों को शायद वेबिनार में मैंने डाला है इंटरेस्टेड वो। हो तो हाँ। मैं अपनी वेबिनार लिस्ट में डाल दूंगा, तो जी आप सर। लोग रोज देखते रहेंगे। जी। वेद सर को थैंक यू मेरा वेरी मच फॉर वेद नाइस सर को मैं डिस्कशन। अच्छी तरह जानता हूँ मैडम। जी अच्छा सर, सर। जी शायद उन्होंने डाला है वो अपने ग्रुप में। हाँ जी। जी। हाँ, ओके सर। तो प्रोफेसर वीके अग्निहोत्री जी, कंक्लूडिंग रिमार्क्स। नमस्कार। बहुत ही अच्छी आज की वेबिनार रही, टॉपिक भी बहुत ही ज्वलंत था और हम समझते हैं इस ओवरऑल डिस्कशन पर हमको हमारे टॉपिक के साथ में आज उस चौराहे पर लाके खड़ा कर दिया गया है जहां पर 2-3 वेबिनार्स की संभावनाएं बन गई। मेडिकल रिम्बर्समेंट, मेडिकल इंश्योरेंस, ओपीडी, आईपीडी, स्टेटस ऑफ आयुष, if not NAVH status is there, मेडिकल कॉलेजेस, आयुर्वेदिक कॉलेजेस, एंड वी नो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल पर तो आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी हो गई है, आयुर्वेदिक दवाइयां भी उपलब्ध है और कहीं कहीं सीजीएचएस में हमारे उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में तो आयुर्वेदिक दवाइयों की पेटी आती है और कई बार तो वो अनयूज इसलिए रह जाती थी कि हमारा एमओसीएच काम ही नहीं कर पाता, लेकिन एलोपैथी डॉक्टर्स भी आयुर्वेदिक दवाइयों को आराम से मांग के, चाहे वो सीतोपलादी हो चाहे लक्षणादि बटी हो, खाते हैं। आरोग्य वर्धनी बटी की तो हमेशा आउटस्टैंडिंग डिमांड रहती है। तो ये सब चीजें तो वो है जो औषधियां मिली हुई हैं, लेकिन वे औषधियां जो हमारे पास नहीं है लेकिन रोगी को जरूरी है और उनको यदि मार्केट से लिखा जाता है तो उसके लिए जो रिम्बर्समेंट पॉलिसी है उसमें हमारी जो आयुष मंत्रालय है वो आगे से और अच्छे से कुछ संशोधन लाएगी, कुछ रिलैक्स करेगी जिससे कि पेशेंट्स को उसका क्लेम मिल सके। इस सब में हमारे डॉक्टर राजेंद्र जी मौजूद ही हैं स्पेशली और शाह साहब भी हैं, तो सब लोग मिलके जो बात रखेंगे वो और आगे डिस्कशन को ले जाएगी। क्योंकि हम लोग वेबिनार टाइम बाउंड है, हम लोग 9 से 10:30 मैक्सिमम हो जाता है। तो जैसा पवन जी कह रहे हैं मेडिकल रिम्बर्समेंट पर एक आयोजित की जाएगी वेबिनार और साथ साथ और भी लोगों के हम सजेशंस और क्वेश्चंस ले सकेंगे। तो आज के वेबिनार में हमारे सभी जो विद्वान अतिथि वक्ता रहे, डॉक्टर रितेश जी रहे हमारे, डॉक्टर अंबिका तिवारी रही मैडम और डॉक्टर रायन जी रहे हमारे, मिस्टर संजीव शाह साहब रहे, सभी लोगों ने बहुत ही गहराई से बातों को टच किया और लिमिटेड समय में किया। और हमारे सारे वो विद्वान जो कि आज प्लेटफॉर्म से जुड़े, उनकी शंकाओं को भी समाधान मिला या कुछ आगे गति मिली। आगे भी आप लोग जुड़ते रहिएगा, आपसे प्रार्थना है और हम लोगों को एनलाइट करते रहिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबका हृदय से धन्यवाद करते हैं जिन लोगों ने आज हमारी वेबिनार को सुंदर बनाया और पवन जी की बढ़ते हुए कदम 514 पर पहुंच गए और आगे बढ़ेंगे, ये सब कल की शुभकामनाएं हैं। वेबिनार सर और भी यूनिक सब्जेक्ट है, जी जी कंसेप्ट जी ऑफ एनर्जी इन आयुष। जी कल वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन डे है जी। तो हमारे आयुष में तो उसके लिए यूनानी से भी बोल रहे हैं इदरीस साहिब, और हमारे यहाँ से कमलेश कुमार द्विवेदी जी, भरत चौरागड़े जी, अनुराग राजपूत जी ये बोलेंगे कल कंसेप्ट ऑफ एनर्जी इन आयुष। तो प्लीज डू ज्वाइन, प्लीज डू। एक आपने लास्ट में सेंटेंस कहा था कि पता नहीं हमारे रहते हुए ये सब रिलैक्सेशन हो पाएगा, आयुर्वेद में नहीं हो पाएगा, हम बूढ़े हो जाएंगे तो मैडम बोल रही चलो अगली पीढ़ी देखेगी। बात तो नहीं, अगर नहीं क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास तो आयुर्वेद में रसायन भी है ना, तो अब वहां पर तो नहीं, वो आयुर्वेद ही रसायन आगे धरे आएगा। रह जाएंगे सर, जब तक मैनेजमेंट NABH नहीं करेगा तब तक वो रसायन भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये नहीं, अपने स्तर को बनाए रखने मैनेजमेंट को साइकोलॉजी चेंज इस कर संघर्ष को बनाए रखने के लिए रसायन खाते रहिए और संघर्ष करते रहिए। जी जी,
थैंक यू सभी को सर, धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल, नमस्कार, कटप्पा प्रणाम। साहब, रितेश जी, अंबिका जी, संजय जी और सभी को नमस्कार।